Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन आउ टोटल पोलराइजेबिलिटी विषय रे पढिबा देखो जो इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन अच्छी इट कैन ऑकर इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एज पर 4 डिफरेंट एटॉमिक mechanism okay when they are subjected to an external electric field आउ याको हमें ए हिसाब रे भाग करि परिबा नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन देन आयनिक पोलराइजेशन देन ओरिएंटेशनल और डाइपोलर पोलराइजेशन तापर 4 नंबर रे स्पेस चार्ज पोलराइजेशन ओके सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन याको हमें फिगर रे बुझिबा दिस वन तो देखो एठी इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन रो क्लासिकल थ्योरी ऑलरेडी हमें पढ़ीछु सो दिस केस इज इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जेतोले ई रो वैल्यू 0 अछि बट द सेकंड केस इज इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जेतोले ई रो वैल्यू नॉन जीरो आसिला ओके सो दैट एबे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो केमती तांकर होउची ना ए केस रे कोन होउची जे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन जो हला ओके व्हेन यू आर अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट एबे पॉजिटिव चार्ज जो अछि माने जो न्यूक्लियस टा अछि एटम भितरे एटा डिस्प्लेस हे जाउची अकॉर्डिंगली नेगेटिव चार्ज बा इलेक्ट्रॉन गुडा मध्य डिस्प्लेस हे जाउचंती ओके सो देयर इज a relative displacement between the nucleus and the electrons okay when an external electric field is applied okay now the displacement of center of the negatively charged electron cloud तारो जदि आमे देखिबा relative to the positively charged nucleus of an atom by the electric field ताले एठी देखो फर्स्ट केस रे in the absence of electric field एटा किछि भी डिस्प्लेसमेंट हो नथिला न्यूक्लियस टा पाखापाखि सेंटर पोजिशन रे थिला तार चारिआडे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड गुडा थिले किंतु जेतबेले आमे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करछु न्यूक्लियस टा एबे शिफ्ट हे गला डिस्प्लेस हे गला आउ नेगेटिव चार्ज मध्ये एठी डिस्प्लेसमेंट हे जाइछि ओके सो दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिजल्ट्स इन अ डाइपोल मोमेंट ओके ए डाइपोल मोमेंट को आमे डिफाइन करि परिबा एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and shift distance so dipole moment he gala pe which is equal to charge q and the shift distance d so pe equal to q d okay acha now gote induced dipole moment jota ki directly proportional rahibo to the applied field strength e so pe is proportional to e or pe equal to alpha e okay एठी अल्फा ई ही गला कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी ओके जदि एठी n संख्यक एटम्स अछंती पर यूनिट वॉल्यूम इन द डाइलेक्ट्रिक ताले दिस इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज कैपिटल P E which is NPE which is nothing but your n alpha E okay ताले ए इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी आमे देखिपा को पाउछु जे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एटा ऑलरेडी या विषय डिटेल आमे प्रीवियस क्लास रे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी आमे पढी सारिछु तापर सेकंड कैटेगरी आसीछि एबे आयनिक पोलराइजेशन सो आयनिक पोलराइजेशन माने ऑब्वियसली द एटम्स व्हिच आर हैविंग द आयनिक बॉन्ड ताले एई जगह रे आयनिक पोलराइजेबिलिटी आसीबो आयनिक पोलराइजेशन इट ऑकर्स ओनली in those dielectric materials which possess ionic bonds jemti कहली such as your NaCl okay so when such a material is subjected to an external electric field then the cations
and anions gets displaced in the opposite direction. Okay, so the एठी figure रे देखि परथबो opposite direction रे cation आउ anion. Okay, cation माने एटा होची तमरो जो नेगेटिव चार्ज, anion टा पॉजिटिव चार्ज. opposite direction रे जेतेबेले हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करछु लेफ्ट साइड फिगर रे देखो एमानको मध्ये डिस्प्लेसमेंट होची. ओके, which gives rise to a net dipole moment. मन रख जितेबले भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मध्य रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हैला माने गोटे डायपोल मोमेंट निहाती भाव में क्रिएट हम. ओके, अच्छा, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट फॉर ईच आयन पेयर जदि आम या कहवा पी आई स्टैंड्स फॉर आयोनिक, then it is equal to again the product of relative displacement di and the charge on the ion. So pi रो वैल्यू हेगला qdi. ताले टोटल आयोनिक पोलराइजेशन केते हला p इक्वल टू n अल्फा i इंटू e पूर्व केस भलिया. ओके, एटी n हेगला नंबर ऑफ आयन पेयर्स इन द डाइलेक्ट्रिक आ e हेगला अप्लाइड फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जोटा अल्फा i हेगला आयोनिक पोलराइजिबिलिटी. ओके, so the ions experience electronic polarization in addition to the ionic polarization, and for most of the material this ionic polarizability is less than the electric or electronic polarizability. Okay, and the polarization is also again independent of temperature. तापर एबे देखिबा थर्ड कैटेगरी व्हिच इज द ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन और याको हमें डाइपोलर पोलराइजेशन मध्ये कहि थाउ. देखो डाइलेक्ट्रिक विषय रे जेतेबेले आमे पढुतिला आमे देखुतिला जे दुई प्रकार डाइलेक्ट्रिक अछि, गोटे हला पोलर आ गोटे हला नॉन पोलर. सो पोलर डाइलेक्ट्रिक जदि आमे कहबा सच एज CH3Cl, এই केस रे एक्चुअली इट exhibit the orientational or dipolar polarizability, and even in the absence of external electric field the polar dielectrics exhibit dipole moment. आमे जानिछु जदि पोलर डाइलेक्ट्रिक कथा कहबा ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर, तेणु करी तांकर गोटे डाइपोल मोमेंट निहाती भाव में रहिबो. नाउ द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली रैंडम एंड हेंस नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हबो. ओके, आउ एई डाइपोल ओरिएंटेशन केतेबेले नॉन जीरो आसीबो नेट डाइपोल मोमेंट जेतेबेले आमे गोटे बाहरु एक्सटर्नल फील्ड गोटे अप्लाई करिबा ताले all these randomly oriented dipoles are oriented in the direction of external applied electric field. Okay, so the electric field try to align these dipoles along the direction of field as shown in the second figure, and this type of polarization is known as orientational or dipolar polarization. So we can say when an external electric field is applied to a polar dielectric, then they माने ये जो dipoles गुड़ा they tend to align themselves in the direction of the field, and the polarization due to such alignment is called orientational polarization. Okay, now orientational polarizability alpha 0 याको आमे लेखि परिबा alpha 0 equal to p square by 3kt, k हिगला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. देन ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन डीबे लॉ को आमे यूज करके लिखि परिबा कैपिटल P0 is equal to n p square e by 3kt. Okay, and this orientational polarization is strongly temperature dependent. देखो एठी temperature टा अछि at the denominator, so एटा temperature उपरे depend करूछि आ जेहेतु denominator अछि so it is inversely proportional, so this orientational polarization decreases with the increase of temperature. Okay, finally the fourth one is the space charge polarization. देखो this type of polarization occurs when there is accumulation of charges at the electrodes. Okay, जेतेबेले इलेक्ट्रोड चारियाडे चार्ज गुडार accumulation जमा ही जिबे or at the interphases in a multi-phase material. Okay, so एठी कोन हबो the ions diffuse over the appreciable distance in response to the applied field, so that it will give rise to a redistribution of charges in the dielectric medium, and this type of polarization is known as interfacial polarization. Okay, तेणु एबे total polarization गोटे material रो आमे लिखि परिबा which is the sum of electronic, ionic, orientational and space charge polarization, that is P equal to PE plus PI plus P0 plus PS. Okay,
आ गोटे जिनस ये देख आम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जोटा अच्छी ताकू आम टे देखीदे सपोज आम गोटे कैपेसिटर नेला हैविंग ए डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स आउ ता भितरे आम पोटेंशियल डिफरेंस जो रोची प्लेट दुईटा भितरे ताकू आम इनक्रीज करवा कंटिन्यूअसली सो दैट एबे इलेक्ट्रिक फील्ड मध्य इनक्रीज करिवो consequently the separation between the positive and negative charges of the molecules of the dielectric will also go on increasing so এই जो separation बड़ी 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 जीव गोटे स्टेज आसीबो जेतेबेले এই जो मॉलिक्यूल भितरे थिबा opposite charges से माने तारो रीजन को भांगी देकी they will break off from the molecule and they become free. Okay, so in this situation the dielectric will not be an insulator, rather it behaves like a conductor. So as a result the capacitor will be discharged. Okay, so dielectric strength कहले आमे बुझिबा the minimum electric field strength which is applied to the dielectric at which its electric breakdown takes place is called dielectric strength. एबे देखिबा आमे टोटल पोलराइजेबिलिटी जोटा आमे टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन रे जेमती पढुतला सेही भलिया ही अछि एटा आ गुटे बहिर मु नेछि टोटल पोलराइजेबिलिटी सपोज आमे याकू कहला जदी अल्फा सो गोटे डाइपोलर सब्सटेंस रो टोटल पोलराइजेबिलिटी को आमे प्लॉट करि परिबा एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी आउ ए जो इफेक्ट रोची फ्रीक्वेंसी रो एटा गोटे important role play करे because dielectrics are often used in alternating fields. Okay, so एठी आमे देखि पाउथुवा जे फिगर रू जे polarizability actually decrease करूची as we move towards the optical frequency. देखो एठी ग्राफ रे लक्ष्य कर एठी आमे तीनटा फ्रीक्वेंसी एठी देखुछु आ तीनटा तमरो जो polarizability रहूची अल्फा डी अल्फा I and alpha E. Okay, alpha D होउची तमरो dipolar बा orientational polarization, alpha I हेगला ionic polarization and alpha E हेगला electronic polarization. Okay, accordingly as we move towards the optical region माने high frequency आड़ को जेतले मूव करिबा तो देखो फर्स्ट आमे देखुतला जे लो फ्रीक्वेंसी रे तीनटा जाको पोलराइजेबिलिटी रो कंट्रीब्यूशन रहउतला हाइट हमरो एतकी रहउतला टोटल पोलराइजेबिलिटी रो तापरे एठी देखो मझी रीजन रे मिड फ्रीक्वेंसी रे एबे केवल दुईटा फैक्टर आछी अल्फा ई आ अल्फा आई आ हाई फ्रीक्वेंसी ऑप्टिकल रीजन रे केवल अल्फा ई ही कंट्रीब्यूट करूची ओके ता माने पोलराइजेबिलिटी कमी कमी जाउची एज वी मूव टुवर्ड्स द ऑप्टिकल रीजन एंड दिस decrease in polarizability is not uniform. It is rather marked only in the microwave, infrared and UV or ultraviolet regions. Okay, this behavior of polarizability can be understood from the study of various polarization processes and from the concept of relaxation time for each process. Okay, ताले आमे total polarization जदि आमे लिखिबा याकू pt which should be a function of time ताले it can be written as p into 1 minus exponential of minus t by tr. ओके एटी p रो वैल्यूटा मैक्सिमम पोलराइजेशन ओके जतेबेले एक्सपोनेंशियलटा 0 हे जिवो ओके व्हिच इज अटेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड एप्लीकेशन ऑफ ए स्टैटिक फील्ड tr हेगला रिलैक्सेशन टाइम for the particular polarization process and it is the time taken for a polarization process to reach 0.63 of the maximum value and this varies widely for different polarization processes. Okay, अच्छा जो चारिटा प्रकार पोलराइजेशन आमे ऑलरेडी ऊपर देखिला टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन एठी मध्ये सेही बडा एठी लिखा हिची बाकी एठी या सहित टिके इन एडिशन टू दैट को फ्रीक्वेंसी रे रहउची सेटा लिखा हिची जेमते कहली इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन अल्फा ई एटा रहउची extremely rapid even at the optical frequency which is around 10 to the power 15 hertz. तापरे ionic polarization already आमे या विषय रे पढी सारछु. It is due to the displacement of ions over a small distance due to the externally applied field. किंतु ions क्षेत्र रे गोटे important जिंस जे actually they are heavier than the electron cloud so that the time taken by these ions for their displacement will be larger and accordingly when they are displaced the frequency will be nearly about 10 to the power 13 hertz
okay, which is your lattice vibration frequency. ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ optical frequency 10 to the power 15 hertz ସହିତ compare କରିବା, then obviously optical frequency is 100 times, that is 10 to the power 2 times larger than the lattice vibration frequency. ତେଣୁ କରି এই optical frequency region ରେ ions ର କିଛି ବି response ରହିବ ନାହିଁ, consequently alpha I ର value ଟା drop କରିଯିବ at the optical frequency. So ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏଇ 10 to the power 13 hertz ବା lattice vibration frequency ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ both electronic ଆଉ ionic polarization respond କରୁଛି. Okay, then the third one, which is the dipolar or orientation polarization. So actually it is even slower than the ionic polarization, as explained in the forthcoming point. देखिबा आकु second point रे. So orientation polarization occurs when the frequency of the applied field is in the audio range, माने जो microwave range रे रहउची frequency जदी. Okay, so याकु देखिबा हमें point wise. एठी first point रे ये कहउची जे जेतेबेले applied field रो frequency बहुत बेसी रहिबो as compared to the inverse of the relaxation time for a particular polarization, ताले सेही particular polarization process टा fail ही जिवो, and so that it will not contribute to the polarizability. Thus the decrease of total polarizability with the increase in frequency आमे जेमति देखुतला एटा disappear हे जिवो successively from alpha d then alpha I तापरे शेषरे केवल alpha e ही रहिबो. ओके, तापरे सेकंड पॉइंट जोटा इंपोर्टेंट पॉइंट एठी कहउजे जे the polarization depends on the ability of the fundamental particles to move relative to each other, and so at high frequency the massive molecular particles cannot move rapidly. जार मास बहुत बेसी रोचे जो मोलिकुलर पार्टिकल से माने एते सहज रे मूव करि परिबे नाही रैपिडली, so as to follow the direction of the applied electric field, or in other words the dipoles cannot rotate rapidly. ମାନେ ओरिएंटेशन जो आमे देखिबाकू पाइबा जदि आमे मैसिव मोलिकुलर पार्टिकल कथा कहबा ता पई जो डायपोल माने रहिबे दे कैन नॉट रोटेट rapidly enough to contribute to the polarization. Okay, so on an average the dipoles remains at 90 degree to the field direction, and hence the orientation or dipolar polarizability will be negligible. Okay, but the electrons relax rapidly because electrons रो mass टा बहुत कम रही था, so the electron cloud distortion follow the field direction more easily at high or optical frequency. So this will give rise to the electronic contribution to the polarizability. Thus finally आमे कहि परिबा जे at the optical frequencies the dipolar or orientation polarizability, that is alpha d, and the ionic polarizability alpha I, it will drop. एमानकर किछि भी रेस्पॉन्स आसीबो नाही, केवल जो electronic polarizability alpha e ही रहिबो. And the third and the last point जे एठी कहउची, thus at zero frequency the polarization is static. ओके, जेमति आमे देखुतला जे जीरो फ्रिक्वेंसी जेतेबेले रहउची पोलराइजेशन टा पूरा स्टैटिक कांस्टेंट रहउची, आ रेडियो फ्रिक्वेंसी बा माइक्रोवेव रीजन रे द इफेक्टिव पोलराइजेशन एटा धीरे धीरे कमीबाकू लागुची. ओके, आ इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी को जेतेबेले आमे पहुंची जाउछु ताहले आयोनिक पोलराइजेशन एटा ड्रॉप करि जिवो, जीरो ही जिवो, आ देयर विल बी ओनली इलेक्ट्रॉनिक polarizability, okay, which is appearing at the optical frequency. Okay, so this is all about your types of polarization and total polarizability. Thank you.